deep interior areas of rural Rajasthan are home to several marginalized groups of people, tribals, ethnic and religious minority groups, and others. Decades ago, a group of determined individuals had decided to take up the cause of these marginalized groups. Initially conceived as an education project for adolescents who drop out of school between 11 to 20 years, Doosra Dashak was launched in the year 2001 with the generous support of the Tata Trusts. The renowned educationist and social activist Shri Anil Bordia was the driving force behind the project. While addressing educational needs of adolescent dropouts, Doosra Dashak had flexibility and community support built firmly into its operating principles. These characteristics have, till date, been the hallmark of Doosra Dashak. It is due to this reason that the project remains unique in comparison to a number of other development programs. मेरे बड़े पापा है जो वो ना बोलते थे कि कंचन तू खेत पे रहा कर पढ़ने आने में क्या फ़ायदा है तुम्हारे लिए और छोटी बहन भाई है जो उनके लिए रखा कर तो मैंने बोला मुझे तो पढ़ना कि नहीं तुझे नहीं जाना तो नहीं जाना पढ़ने जो उन्होंने बोला कि कंचन तू पढ़ने जाएगी कि दूसरे दशक में तो मैंने बोला हाँ मैं पढ़ने जाऊँगी दूसरे दशक में तो मेरे बड़े बहन बोला कि ये तो जा रही इनकी मर्जी तो जाने दो पढ़ने के लिए. The initiatives like the 4-month-long bridge camps or the short-term learning activities or continuing education initiatives could not have been achieved without the dedication of field workers, cadres, master trainers and countless other field resource persons. These individuals, with their commitment and enthusiasm, are at the forefront of the project initiatives. The 1-month-long Master Trainers training is also inclusive of support provided to trainers from partner NGOs across 7 other states of India. The activities in the residential camps are designed to instill knowledge, self-reliance and inspiration among the learners. शुरू में आए तो हम शर्मत थे किसी लड़की से और ढंग से हम सहेली भी नहीं बनी फिर हमने धीरे धीरे सहेली बनाई बोलना सीखा फिर हमने पढ़ना सीखा. Inclusion of elements like songs, theatre and teaching learning materials in the daily curriculum make the learning process stimulating and relevant to the social context. Internal evaluation exercises in the 4-month residential camps, in which both trainers and learners participate actively, are inbuilt into the camp structure. External evaluations are also important, especially for transitioning the learners into mainstream schools. मेरा नाम रीना सहरिया है और इस साल मैंने 12th की है और उसके बाद फर्स्ट ईयर करूँगी. जब मैं दूसरा दशक में ही आई थी तो मैं खेतों में मजदूरी करने जाती थी मम्मी पापा के साथ. दूसरे दशक में आने के बाद मुझे पढ़ने का मौका भी मिला और मैं अभी 20-25 बच्चों को कंप्यूटर सिखा रही हूँ. Multimedia and digital skill set is also crucial to the process of awareness dissemination among community members, especially women and children. Facilities like Gyan Vigyan Kendras, CIRC centers, libraries and reading rooms address these needs even in the most inaccessible areas of the state. इक्वेलो एक ऐसा सामुदायिक केंद्र है जिसमें विद्यार्थी विद्यालय समय के पश्चात यहाँ आकर तकनीकीकरण, ज्ञान, विज्ञान और कला में अपनी रुचि दिखाते हैं तथा ग्रामीण लोग अपनी सामाजिक, व्यक्तिगत और प्रशासनिक समस्याओं का हल निकालते हैं और साथ ही यहाँ विज्ञान मेलों द्वारा समुदाय के साथ वैज्ञानिक सोच का विकास किया जाता है. Besides education, diverse other development needs of the community are also identified and addressed by team members of Doosra Dashak. Often, this entails working in close nexus with community leaders. The Jagrat Mahila Sangathan or JMS, constituting largely of marginalized tribal women, is today a mammoth organization. JMS aims at bringing all-round equity, eradicating deep-rooted social evils against religious and ethnic minorities. सुंडा गांव के बंधवा मजदूरों के 135 जना की हमने 650 बीघा छुड़वाई. हमने सरकार से कोशिश कराओ के फिर हम जागृत महिला संगठन की महिला वहीं रहे और हमने सामना किया जमींदार का और उनकी जमीन अकाई. The Yuva Shakti Sangathan is the youth-centered activist movement supported by Doosra Dashak, crafting dynamic leaders out of young adults in village communities.
Through these women and young adults groups, Doosra Dashak has created strong and emancipated individuals who are changing mindsets starting from their own homes. लेकिन मुसलमानों की ज़्यादा लड़कियां कम भेजता है पढ़ाई के बारे में, बाहर निकलने का मौका नहीं देता है। तो मैंने कहा हाँ मैं वहाँ पे बोलूँगी। बोलते बोलते हमारे गांव के पास में ही है, थोड़ा दूर है कालू खां की ढाणी, तो वहाँ मैंने भाषण दिया। These young adults today are crafting their own niche within their villages and communities, as well as participating in mainstream government institutions. जैसे कि इलेक्शन आए, इलेक्शन में मैं इस संस्था से नहीं जुड़ती तो मेरी कभी जीत नहीं होती, क्योंकि हमारी पंचायत में इसी वजह से मेरी सब जानकारी और मेरी पेंशन करता है ना, तो इसी वजह से मेरी संस्था के बारे में, नहीं तो मेरे को कौन पेंशन था। There are other beneficiaries. सीमा ने दूसरा दशक के आवासीय शिविर से निकलकर केजीबीवी में दाखिला लिया और आज समय के साथ कदम मिलाकर सफलता की ओर अग्रसर है। मेरा नाम सीमा कुमारी है और मैं सियावा की रहने वाली हूँ। हमको तो घर का काम ही करवा देते और हमें तो पढ़ाई के बारे में कुछ पता ही नहीं था कि किस लिए ये जरूरी है। दूसरा दशक की वजह से मुझे सही पढ़ाई मिल पाई है और मैं दूसरा दशक की बहुत आभारी हूँ। और दूसरा दशक की वजह से मैं अब आगे भी पढ़ाई कर रही हूँ। मैंने 12th कर दी, अब मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ और ग्रेजुएशन के साथ साथ मैं IAS की तैयारी कर रही हूँ। It is said that a journey of 1,000 miles begins with a single step in the right direction. For the beneficiaries of the Doosra Dashak Project, the journey has already begun. They are the dreamers who have dared to dream and change their world one step at a time.